अस्सलाम वालेकुम। आज हारून हमारे साथ नहीं है, and I think most of the people are aware of that के what the tragedy happened in his family. His father passed away this afternoon. His father was in quite a critical stage or situation for last couple of days, and ultimately they decided to. He was on ventilator, but today the family decided that it's not feasible anymore to keep him on a ventilator. And after some time, when he was off from the ventilator, uh, he couldn't survive that stage. So, very, very sad news for us, for all of us, given that we are so closely working with Harun, so closely associated with Harun. Uh, I think it's quite a difficult situation for the family to go through. So we pray that Allah bless them with the courage to really sustain the loss here. Okay, today we will continue with our business model canvas. आज हम उसी को continue करेंगे और conclude करेंगे. But before going in that direction, it's very important to understand आप लोग overall, what is your understanding of philosophy? What does it mean for you? The question is, what does philosophy mean for you? School of thought. Okay. Anybody else? Basic ideology of one's personality. Okay. Handle a balanced life in a positive manner. Beliefs. Yes. Is a knowledge out of belief and faith. One point of view, ideology, ideas, perspective. How does philosophy help you in life? So interpret situation, help in living the life, take decisions. What else? Getting ideas, triggering thoughts. What is the question? I couldn't get you too bad. Network. Rabia, question is that the first question was, what is your view around philosophy? And the second question was, how philosophy helps you in life, if it does. Okay, when you get blocked at any stage in life, philosophy helps you to get out of it. Arshia Yusuf, Zishan Amin, Walaikum Salam. Especially in guidance. Philosophy is a secret of something and it helps you to know inside and outside the box and get the right direction. Nasser, guideline of life, philosophy make you think or search to be better. Murtaza Hosseini. So we all believe that the philosophy has a role to play, right? The philosophy which you carry consistently has a role to play. The philosophy, when we talk about the philosophy, has got a many dimension, and we are talking about where we try to really create the hypothesis, test that, and really bring it out around that hypothesis, and try to propagate and engage other and develop
that learning process further. So philosophy helps us to raise the right kind of questions. There could be very philosophical questions which we talk about, for example, why we exist type questions, or it could be a very fundamental philosophy, a value set, how you run your business. The question is how consistent you are with the philosophy you develop, and even if you evolve it, because the by the time you grow, by the time you gain experience, जैसे जैसे आपका तजर्बे बढ़ते हैं, उस लिहाज से आपकी सोच भी जो है वो चेंज होती है, एंड देयर इज नो हार्म इन दैट, उसमें कोई कोई गलत या सही बात नहीं है। लेकिन आपका वो जो वैल्यू सेट एक वैल्यू सेट से दूसरे वैल्यू सेट में इवॉल्व होता है, आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं, एंड हाउ मच यू वुड लाइक टू स्टिक टू द ओल्ड वन एंड हाउ वुड यू लाइक टू इवॉल्व टू द न्यू वन। सो फिलॉसफी प्रैक्टिकली आपके लिए वो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं जिसकी बेस पे आप एक्ट कर रहे होते हैं। आज भी अगर आप किसी से मिलते हैं और उसके मुतालिक एक ओपिनियन डेवलप करते हैं, तो दिस इज द वे यू थिंक। आप लोगों को किस तरह देखते हैं, एक ही चीज सामने पड़ी हुई है, उसको दो डिफरेंट लोग देखेंगे, उसके मुतालिक दो डिफरेंट ओपिनियंस डेवलप होगी, जस्ट बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस, देयर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। सो वो जो फंडामेंटल्स हैं आपके पास, दैट हेल्प यू टू डेवलप ओपिनियन, और गाइडेंस जो आपके लिए इंटरनली जनरेट हो रही होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। सो नाउ ब्रिंग इट डाउन टू अ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन with your questioning. आपके क्वेश्चंस जो हैं, हाउ यू वुड लाइक टू एंगेज विद समबडी। अब उसमें एंगेजमेंट का भी एक आपका जो, जब हम बात करते हैं कि दो लोग आपस में मामलात तय करते हैं, तो उन मामलात को तय करने के पीछे भी और उस तरीकाकार में भी कोई ना कोई वैल्यू सेट होता है, राइट गाइस, जस्ट एक्सक्यूज। अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो जब हम आपस में मामलात भी तय करते हैं, तो वहां पे भी आपका एक करेक्टर रिफ्लेक्ट होता है। वो करेक्टर जो है उसकी रिफ्लेक्शन आपकी सोच से आ रही होती है, और वो जो सोच है वो आपके उन सवालों से, उन सवालों के जो जवाब आपने अपने लिए तय किए हैं, क्योंकि जवाब तो आपको हर सवाल का बहुत से मिल जाते हैं ना, लेकिन जो जवाब आपने एक्सेप्ट कर लिए, जिसने आपकी वो सोच डेवलप की है, उस सोच के तहत आपका एक करेक्टर डेवलप हुआ है, और वही आपके मामलात में रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगी। सो जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो हम बिजनेस में सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एक कस्टमर है जिसके लिए आप एक वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आ रहे हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, या देयर इज अ कन्वीनियंस यू आर जनरेटिंग, यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट। वो प्रॉब्लम अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, या आपने किसी एक एग्जिस्टिंग चीज को एक बेहतर तरीके से लेके आए। अब आप उस कस्टमर के साथ करेंगे क्या, हाउ यू, आपके मामलात किस तरह चलेंगे, तो उसमें आपका बेसिक करेक्टर और बेसिक फिलॉसफी जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। बहुत सी जगहों पे आपको एक बिजनेस मॉडल मिलेगा जो कि कॉस्ट ड्रिवन होगा, जहां पे आपकी गुफ्तगू ये हो रही होगी कि मैं एक बेहतर चीज सस्ती दूंगा, और उसी तरह आपके कस्टमर सेगमेंट होगा जो आपकी इस फिलॉसफी से एग्री नहीं करता। वो कहता है मुझे अच्छी चीज चाहिए और मुझे कॉस्ट का कोई मसला नहीं है, ठीक है, बल्कि वो बाय नहीं करता। वो आपका कस्टमर सेगमेंट है, उसका अपना एक मिजाज है, अपना एक सोचने का तरीका है। आप उसको सस्ती चीज बेचने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खरीदेगा। वही चीज आप उसको महंगी बेचेंगे, तो वो उसको खरीद लेगा। सो जिस तरह आपकी अपनी एक फिलॉसफी है, इसी तरह कलेक्टिवली जब हम एक कस्टमर सेगमेंट को देखते हैं, तो उनका भी एक बाइंग बिहेवियर होता है, उनकी भी एक सोच का डिजाइन होता है, और सोच का डिजाइन उनके एक्शंस और कैरेक्टर पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो उस कस्टमर सेगमेंट की बाइंग बिहेवियर को समझना, उसके लिए जरूरी है कि आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें। बहुत से लोग हैं जो एक, हमने शुरू में भी एक दफा एग्जांपल पे बात की थी कि कितने लोग हैं जो 500 रुपए की शर्ट लेना चाहेंगे, और कितने लोग हैं जो 10,000 की शर्ट लेना चाहेंगे। इट्स नॉट अबाउट अफोर्डेबिलिटी, वी आर नॉट सेइंग दैट दे आर बाइंग इट, लेकिन वो चाह क्या रहे हैं, उनके लिए 10,000 की शर्ट मैटर करती है। दे एस्पायर टू गेट to the level to buy it, not because that shirt drives a satisfaction, that sense of possession drives a satisfaction.
एक 500 रुपए की चीज ओन करना और एक 10,000 रुपए की चीज ओन करने में एक डिफरेंट सेंस ऑफ पोजेशन है। लेकिन इसके पीछे डेफिनेटली जब व्हेन वी लुक एट द बिहेवियर, उनका सोचने का एक अंदाज है, उस अंदाज के तहत वो एक्ट करते हैं, और जब वो एक्ट करते हैं तो उसको एक डिफरेंट वे से वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे होते हैं सोसाइटी में, उस अपनी सेंस ऑफ पोजेशन को जब लेके चल रहे होते हैं तो वो उसको एक डिफरेंटली रिफ्लेक्ट भी कर रहे होते हैं, लोगों को शो भी कर रहे होते हैं कि दिस इज द वे हु आई एम। सो जब आप बिजनेस की बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर सेगमेंट आपका। जब आपने एक वैल्यू प्रोपोजिशन डिसाइड कर लिए, अब आपने उसके बाइंग बिहेवियर को, उसको एड्रेस करना है, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उस कस्टमर सेगमेंट की सोच को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उस सोच को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आप उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है उसको थोड़ा सा देखें, नॉट नेसेसरी कि आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ पे आपने बेस करना है। Guys, sincere apologies, but you just have to give me 2 minutes. I'll be. सो उस उसके जो जिंदगी की सोच है, जब तक आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी है, आपका कस्टमर सेगमेंट भी सही है, और अब आपने ब्रिज डेवलप करना है, एक चैनल डेवलप करना है जिसमें आपने उससे कम्युनिकेट करना है। और उस कम्युनिकेशन चैनल में आपने वो लैंग्वेज, वो विजुअल्स, और वो उस तरह की गुफ्तगू और उस तरह की अप्रोच लेके आनी है जो आपको ब्रिज कर सके आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन को उस कस्टमर सेगमेंट की लाइफ की फिलॉसफी में उसको एम्बेड करने के लिए। द क्वेश्चन इज व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग, कैन योर कस्टमर सेगमेंट सी दैट वैल्यू? यू माइट बी ब्रिंगिंग अ वैल्यू, लेकिन आप उसकी कम्युनिकेशन जो है उसको उस तरीके से नहीं लेके आ पाते जहां पे वो उस सेगमेंट में उस वैल्यू को देख सके। सो गोइंग बैक अगेन टू द बिजनेस मॉडल, आज हमारे पास जो एक्टिविटी है हम उस पर वापस आएंगे। So I would suggest, I think we can see some hands raised. Let me see if we can bring people there. Tahira Iram, you can unmute yourself if you want to share something. Tahira, आपने हाथ raise किया हुआ था. You want to share something? Okay, great. So now we would like to invite people who want to share their business model canvas and talk about कि उनकी customer segment की understanding क्या है, उन्होंने क्या बेचना है। वी विल कम टू दैट, बट डेफिनेटली कस्टमर सेगमेंट पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू आज जरा डिटेल में चाहेंगे। सो हु इज बोल्ड इनफ टू शेयर देयर बिजनेस मॉडल? You can raise your hand and we can bring you to the presenter, and you can share your business model. Anyone who is ready with the business model? Okay, then I start picking up myself. So if we can ask Faisal Mohammed, sorry, Faisal Mohammed. Faisal Mohammed.
Okay. Daniel Ahmed. Daniel Ahmed. Okay. Kwab Aleptagin, our merciful warrior. Without sharing a business model canvas, we are not going to uh, move on. Yeah, so Kwab, are you willing to share it? And then we can talk about the philosophy. Please go ahead. Assalamualaikum sir. Walaikum salam. या सर पहले तो हारून साहब के लिए and allow the father to after my and secondly, yes, we worked upon your guidance on this weekend. जैसे आपने कहा था कि 8 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए तो हमारे ग्रुप को लीड कर रहे थे अर्शद भाई एंड शहबाज भाई एंड द प्रेजेंटेशन उनके पास है और मानूर थी जुमेर थे हम 8 लोग थे तो आई थिंक दे आर इन सेशन अगर हम थोड़ा वेट कर लें तो दे बी एबल टू प्रेजेंट Okay. Who else is there who is willing to share, who is ready to share? Thank you, Kwab. Anybody who's ready to share. Otherwise, how are we gonna move on? Tahira, आपका हाथ अभी भी you have raised your hand. Tahira Aram, do you want to share something? Anyone else who's ready with it? We can take a 5 minutes break and you think about it and then but we need somebody to share to move on. We can't move on without sharing. किसी को जुर्रत करनी पड़ेगी. Okay, we take 5 minutes break. Try to have a glass of water. Bring your courage back and let's see who is willing to share.
Mutad, if you can uh, make Arshia presenter meanwhile. Ashia, you are presenter. Please share your screen. Assalamualaikum. Walaikum salam. Ji Walaikum Arshia, salam. over to you. मैं थैंक यू सर। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी बिल्कुल आपकी स्क्रीन हम देख पा रहे थैंक यू सर। ये मॉडल हमने प्रिपेयर किया था व्हाइल वी वर वर्किंग फर्स्ट टाइम ऑन बीएमसी और दैट वाज अ टीम एफर्ट। टीम में हमारे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे, जिनमें से अमर रहमान थे, ज़ीशान जहाज़ेब थे, वर्दा थी, आमना माहीन थी और कुछ और भी पार्टिसिपेंट्स थे। तो आइडिया मेरा था, लेकिन सबने मिल के इस पे काम किया था और हमने मिल के इसको प्रिपेयर किया था, इस मॉडल को। और basically this model is about a business of handicrafts of Pakistan. We decided to take our handcrafted products to European markets and UK market through Amazon and other channels. But basically it was through online platforms. And the value proposition, while coming to value proposition, what we are going to offer is handcrafted jewelry, handcrafted dresses. Like Pakistan has a very rich heritage and culture, and we have a lot to offer to the world. So what we decided, there would be handcrafted jewelry, decoration items. There would be different types of embroidered dresses, be it shawls, a complete dress, or just like winter wears, like we do cap shawls or anything, but the stuff should be hand embroidered. Or उसमें there are a lot of varieties, as I talked about earlier. Kashmiri variety and Bahawalpur hand embroidered items, DI Khan items, DG Khan type of embroidery, and then comes Taxla, where from where we can get stone made products. They're also handcrafted. Or एक और पाकिस्तान में जो क्राफ्ट है सिला वाली क्राफ्ट, which is very much famous और बहुत like rich in quality and texture, बहुत उसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर वर्कआउट किया है एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू promote that craft because in ancient times it was very much popular and people were buying it. Now because they were working in traditional ways. They didn't adopt the technology, so that craft is not anymore in markets. There are only few persons in villages who are working on this craft. So government of Pakistan is trying to revive it, and there are many other type of handmade products. Another thing, which is, it's not about only taking parts and handicrafts to the global market and introducing the world to our rich culture and heritage and products and bringing revenue to the country. It was also about the poor craftsmen and women. They are working in villages. They are like they are very skilled, they can do a great work, but they do not have access to the markets. They do not get paid what they actually deserve. उनकी productivity भी इतनी ज़्यादा नहीं होती because they lack technology. Or so we decided we will contact those poor craftsmen and women through different platforms, as there are some platforms in Pakistan and they are trying to get all the like people who know some skills.
they are trying to get them on one single platform. So we decided we'll contact those institutions as well, and we'll try to go to the suburbs and in Bahawalpur and these areas. We'll try to find out the skilled persons, and we'll equip them with basic technology so that they can produce better, and they can and we'll pay them what they are getting right now. We'll pay them better than that. So it was about supporting the poor class of Pakistan, and also licensing Pakistani products to the global market. So that was the basic idea. For me, it's I wanted to do something for the poor of Pakistan and poor people of Pakistan. So I decided this way I can help out. And when it comes to customer segment is basically women of all age groups, be it teenagers, young girls, children, like mm, yeah, kids, teenage girls, college going, university going, women who are at home, housewives, and all like women of all age group are our target. Because women love to, as we have mentioned here as well, women love to add on precious, delicate, and beautiful handcrafted items to their wardrobes, home, and office decor and to beautify the kitchen. So our customer segment is basically we are not focusing on price because handmade products are obviously they are expensive than the other products available in the market. So I think when people they want to buy handmade, they are willing to pay a relatively higher price. So it was not about a low price, like offering products and lower cost. It was about basically the basic idea was to present quality products, introducing bring revenue to the country, and supporting the poor segment of the country. Should I explain the other parts as well, or No, no, thank we you, are Arshia. going Let's to let's stick take to a break customer here, segment only? and yeah, so let's come back to the customer segment. You said that the price is not a one of a consideration, so we are looking for middle class and upper middle class and elite class here, right? That's the one where the Yes, price is not a one of a consideration. So what do you believe why these women, apne, you said that they would like to add the delicate and the beautiful handcrafts in their wardrobe. So why you believe they act the way they act? What drive their behavior? because being a woman, I know like I cannot resist beautifully crafted, especially handmade jewelry or beautiful dresses or home decor items. So it's like kind of, you can say, um, philosophy of women. They cannot resist such things. Is it right to generalize it? Specifically, where there are alternates available, there are diamonds available, there is a gold available, there are maybe very well crafted Italian ways and like the decoration pieces, jewelry. So why they should come to Yes, the we cannot handmade? What generalize it. will drive? Well, we cannot generalize it because everyone cannot, everyone cannot like the same thing. But there is a segment who loves to buy handmade products. Especially if we talk about UK market or European market, there people love to buy such products. They love our products because I have lived there. My early education, like kind of stuff was here in Italy, so I know my friends, my teachers, and all my like school fellows, they loved our products. They were always asking me, where did you get this scarf, where did you get this jewelry, and kind of stuff. They love our products, and whenever I was like traveling back from Pakistan to there, I was getting some gifts for all of them. And yeah, I know people around me were they were always loving the handmade stuff.
Great. And what drives them to buy the handmade stuff? What is their behavior? What is the driver for their behavior? They like it, it's a beautiful, but there are 10 other things which are beautiful. So what is the key Yes. element, or what is their philosophy when they come and they look at these handmade unique items? So why they are acting, again One the thing question coming back. they are hmm, one thing they are unique. They are not easily available in the markets. And the other thing, when if we talk about affordability, they can afford these things because they have a better standard, life standard. They can afford such things. And why they are going to like it? Because, as I said, it's unique. And if you are there are vibrant colors, they love colors. And they are usually not such sort of products easily available in their markets. And one other thing, there was an expo going on in Milan, and there was Pakistani stall as well. And when we visited with the friends, and I saw maximum people, a lot of people were there at Pakistani stall, and they were buying and they were giving orders, and they were like everything from our country because again, they're unique. The colors are vibrant in our handcrafted items. If we talk about jewelry and dresses and scarves and shawls, and again, quality is very good. I guess these are the reasons. Anything else? Anybody else who can bring up why people try to buy unique items? It's not something they can't live without it. It's not an essential item. Why they try to buy diamonds or handicrafts or something which is unique, difficult to get? It's kind of status symbol as well. Exactly. So the customer segment you are looking at is the one where the basic philosophy or a significant behavior is driven through the sense of possession and showing off to others that what they can get, which most of the people can't. So their sense of pride they drive through that possession is a key to your customer behavior. So if you will let them know that there are only two pieces in the world, you can get the better price just because they know that there's only two people who can own it. So that's the fundamental Hmm. behavior which is driving them to come and buy the products, which are no doubt beautiful, but the uniqueness is that not everybody can get access to that. So this is their philosophy of possession, their philosophy of life, to possess something which they can show off or they can have a sense of pride for themselves around it. So that I was talking about when we talked about the philosophy. Whenever somebody behave in a certain ways, there is a philosophy of life which they are reflecting, a character which they are reflecting. As soon as you crack that code, your communication will be different with them because now you significantly confident or you have a conviction that what drives their behavior. So if you tell them that there's a one piece which is x amount, and if you come with the same thing that's the only piece in the world and you put like 10x price to that, there are people in your customer segment who are more excited to buy it even if it's ugly, just because nobody, it's a rare thing Hmm. to own. So that's the kind of behavior when we are looking at this kind of business. So we have to drive that, and that will bring the maximum money back to those artists who are basically putting it together. Jo aapka, this, I love this one because it's a business with purpose, and it's create a certain uh, circulation of money, and it's bringing the money directly to the people and the communities who need it the most. And it's not that it's not coming as an aid, it's coming as a value and the right kind of value for their effort. So it's a very important one. Uh, in Africa, they have got a similar business model, but it's very difficult to execute once it's come to the logistic handling and once it's come to the handling those artists. They have got their own moods, uh, and then handling them and managing them is a difficult one. But believe me, if you can get to that kind of business, you can go back to the government and you can tell them that any dignitary coming to Pakistan
they should give these as a gift rather than anything else. So you have got a bigger market on the government side to promote Pakistan and the heart of Pakistan. Similarly, in Europe, you have got a big opportunity where people are just trying to bring a purpose in their life, and most of them can't figure it out, and they try to create more and more rare possession for them, and they try to let other people know that they are the one who are owning it, these unique, and that's not accessible, but they are the one who can own it and who can get it. So that's helped them to really have a self pride, and that's how they drive their purpose. So I think those behavior of that customer segments are important to really crack, and we are still generalizing it. There are people within the same customer segment who do the things differently, like in UK specifically, if you go and you tell that you are selling something and it's a little bit high price but it's helping community, in the UK particularly, the customer will prefer to buy an expensive item which has a purpose behind it, rather than buying the same item from the other vendor cheaper, which does not reflect the purpose. So I think these are the things which are important to understand from your customer segment perspective, to build and maintain and retain the relationship, and to build the right kind of communication. That's why today we will be focusing more and more on a segment and trying to understand and trying to crack the code, that what drives their behavior and their buying behavior specifically, what is their philosophy of life, and can we really crack the code and communicate something which resonates with them well. But thank you very much, Arshia. Any question or suggestion for Arshia? Thank you, sir. Okay, so there are a few points there in the question tab, so you can pick up on those. But I think it's a great business model. If you manage to pull it together, that's a great help for the country and the community at the same time. Inshallah. Thank you. Inshallah. So if Thank we you, can sir, for have a giving the next, opportunity. thank you, Arshia. So if we can have a next presenter raise the hand, and we can request Mutahid to bring you to presenter. I can see Yes. that Junaid Yes, ji. sir. Yeah. Manu has shared her business canvas and want to share. Okay. Okay. Manu, if Mutahid, if you can make Manu presenter. सर आई थिंक मैं शेयर करूंगा स्क्रीन Saida क्योंकि Manu उन्होंने Ras. Okay. So so who's sharing the screen? Can you raise your hand? We have a background sound somewhere. Okay, please go ahead. मुतद मलिक हुसैन को आपने प्रेजेंटर बनाना है. Okay, Malik, you are the presenter now. You can share your screen. There we go. Yes, we can see. Assalamu alaikum, everyone. This is Sayyida Mahnur Asif. I hope I'm audible and all you can hear me. Yeah, we can. We can. Manu. Okay, I'm just going to give the basic idea of the organization we are proposing, and it's in the initial stages. But we are going to create a web-based services rendering organization to help or to take the advantage of the ACCA professional strength to launch basically a web-based services organization. We are going to
create a profile-based service website where we're going to support the ACCA professionals to launch their profiles and to present themselves as a brand that we have always talked about throughout this 6-digit program. And we are basically pulling up their skills and creating an end-to-end product. We are going to capture our clients who are in need of, going to establish new businesses and they're requiring skills. The basic purpose is to create the worth of ACC in Pakistan, especially. Rest of the model shall be discussed by Malik Shahbaz Saab. Over to him. Thank you, Manur. So this is our business model. As Manur has highlighted, what our value proposition is, or what we are trying to sell, or how we are trying to make the money. Like, we are alliance of the ACCA members. We are providing single platform for the ACCA fraternity to promote finance profession in Pakistan. What we aiming to help them progress in their career, and at the same time, what we are trying to do, we are going to support the businesses to grow. What our key activities are going to be? Main activities are like, we will have a network of ACCA members, students, and affiliates. We'll have a strong database management, individual diagnostic. What we'll be offering to all the associate members and the students: individual diagnostic and analysis, their personal development support identified during the diagnostic, their professional development and support, like the areas where they're lacking. So we will offer them the training. Setting up the ACCA firms, encouraging people to set up ACCA firms to promote the ACCA brand, and we will offer them the help. Operational level linkages, development with all the other professionals. That's what we're doing. We will be analyzing the local markets, approaching employers to include ACCA as a qualification or in their job requirements every time they advertise a job. Active presence on web and social medias. And like what we're doing, we will be we'll be working at the operational level input to support the regulators to win recognition for ACCA. We know ACCA is doing a lot, but at the same time, we can definitely come and support ACCA Pakistan team. We will offer the training support at this. What we want to do, what corporate social responsibility activities, we want to actively participate in these one. So we'll have a pool of freelance ACCA professionals and the accounting professionals who will be offering their services on our platform to the other people, and we will be also finding work for them. So next, before I move on to the key partners, can someone please confirm you can hear me? Yes, Hello? we can hear you. That's good. Yes, Sorry we about can. that. Yes. It's too quiet in here. Key partners, like who our partners are going to be. Our key partners are going to be our ACCA family mainly. We will be offering the services to the other accounting professionals, but ACCA definitely take the prime role. In all the ACCA fraternity will be the prime partners with us. ACCA Pakistan will be working closely with them. All regulatory authorities, training institutions, IT experts, marketing experts, HR experts, and angel investors and the professional bodies. So key resources, if we look at that, it like the strong networks. ACCA 6-digit program has given us this team of these 8 people, and we are building on this network. So all the members firm, we will be liaising with them as well. Robust marketing, we will be doing the traditional and the digital outreach activities. Human development expertise, we will have the linkage with the ACC and other professional bodies.
These are going to be our partners as well as our key resource training and IT team. We will have the CSR dedicated team and stakeholder management team who will be liaising with all our partners, mainly our ACCA members and the businesses we are providing the services to. Then we have got the professional teams of the resource, all our accountants and the flexible resource. When we say some people who are working or doing different jobs would be able to work with us on the hourly basis on the basis of the assignments. So these are going to be our key resourcing. Now, if we move on to the customer segments, who our customers are going to be. So we have got 3 key customers. Our ACCA fraternity, like what we'll be offering different types of memberships, basics, advanced, and premium memberships to our ACCA fraternity. Then we will be offering our services to the businesses. That's what our main revenue in the later years will be generating. We'll be offering them the accounting and advisory services. And what we're doing, we will be helping angel investors and also our ACCA family, all the people who have got great ideas and they're looking for the funding. We will try to come in as a matchmaker, so to promote the ACCA professionals. How we are building the relationship with our customers, like as I said earlier, traditional and the digital outreach marketing, that's what we will be doing. We'll be having the networking events across Pakistan. We will be supporting all our members in their who are in the practice to achieve the licensing and train them. Social media ads, like we will be working with the other partners and the businesses to offer co-create solutions. Like what we want to do is to retain the members, whoever join us, and also build on that. So we will definitely be working closely with the ACC fraternity and the other accounting professional. We'll have the regulatory relationship team who will be looking after, will be liaising with all the regulators and all the regulatory bodies. Customer care units. So that is a dedicated units which is looking at all our 3 major clients, ACCA, fraternity, businesses, and the angel investors. So the channels, how we are selling our services, like we offering our services to members, like the basic, advanced, and premium membership. We are using the digital and traditional delivery methods. We will be physically visiting the offices. We will have the stream of visiting consultants as well, so will be working for us. Social media campaigns, we will be launching YouTube channel, so stakeholder management team again. So these are our channels. So revenue, where we are driving the revenue from to fund our business activity. Like we will have the membership fees coming. Like we are offering basic membership free of cost, so our members will be able to enjoy certain benefits, all the available on our platform. Then we will have the advanced membership and the premium membership. Advanced membership will be the people we will be finding the jobs for, whereas the premium membership will be the people we will be working with as a partner, like they will be our freelancers, co-partners, and also they will have all the facilities available to the advanced members. Then membership fee is the biggest revenue. Then we have got the consultancy fees, advisory services, social media ads revenue, solution providers, linkages fees, development fees. So these are our main income streams at the moment. So the cost, where we will be spending this money, we will be spending this money on the website and the app development team, because it's a web portal, it's a platform. So that's where our bigger investment will be going. So initial investment will go over there. Marketing costs, we will be spending the money on that one, on all these events and all these advertising campaign we are running. Right. We will have the services of the HR experts who will be running the diagnostics and the development plans for the individuals and running the training courses. So we'll have our permanent staff, especially in the IT side,
we'll have permanent staff. On the other areas, we can afford to have a flexible pool. Consultants fees is the, like, all the consultants who are working with us as a freelance are on the contract basis. Research and development, that's another chunk which we think is the vital part for our organization. And then we will make sure we do all the fundraising for all our CSR activity, and we have a allocated pool of funds. So that's what we are progressing with at the moment. So before I hand over to Sir Sajid for questions or the comments, what we have done a short survey, which is going to take 1 minute. We just want to assess your feedback about our project. So if all the associate members who are on the call, we will share this in our WhatsApp group, and we'll appreciate if you can just find a minute or two to respond, so we can assess what is the demand for our services we are planning to offer to our members especially. So we can share this link in the members WhatsApp group, and I will request Mutahid if you can also share the same link in the associate and the student group. Thanks very much. Thank you, Malika sir. Just one question to start with. You are looking at that you will help people find the job or employment or the work, right? That's a primary value proposition we are looking at there, right? So what we are doing, we are trying to become a leading organization in the HR recruitment, training and development, management consultancy, and outsourcing business. So we have got four main revenue streams over there, and the fifth one is the helping the investors to invest their money. Okay, so let's look at the customer side. So who are your customers? The one who are looking for job or one who want to outsource the work? So we have got three categories of customers. One is definitely the ACCA affiliate students and members. So they are looking for the job. That is correct. Then those people who are already in the job and but want to increase their income by freelancing. So we will offer them the freelancing services. Then what we have got the people who want to do their businesses, but they are not confident enough to take the first leap. So we will hold their hand and take them and develop them or guide them or mentor them to the business. So, and the next one, this is the one category. This is our ACCA fraternity. It is payback, and we're not expecting a significant revenue, major revenue from this area. It is just making sure we have got a strong network with us, and at the same time we are giving something back. Our key area is going to the business. That's where we are offering the advisory services, and it is the what you call a accountancy firm or the audit advisory firm. So the types of the activities we thinking is the registration of the companies, financial modeling, bookkeeping, accounting, like the review assignment, advisory services, like taxation advisory, their recruitment and temporary recruitment services. So it's IFRS implementation, ERP implementation, it could be the software development, it could be legal and regulatory compliance, market research, business incorporation, or business restructuring. So different items are there. So our third customer segment. Yeah, Sorry, please sir. go ahead. So the third customer sector is the angel investors. Like in our fraternity, like there are senior ACCA members, you might have some cash and you want to invest and you are looking for an idea. So we might be able to assess or offer you some ideas presented by our ACCA members or students who haven't got funds to start their business. So we can do these match services. We can do the assurance on the both sides and facilitate both the investors and the startup to grow, especially in our ACCA fraternity. So I think you have got a strong value proposition once it's come to the ACCA fraternity community, Pakistan, outside Pakistan.
But if we go back to the business, why the business should come to you? Because the Like services you are offering are not unique. So what's unique about it? How you will drive that customer behavior to buy your services? so what we are doing, it is the main object is the quality of the service, and it's what we are doing. We are offering end-to-end solution. And again, I would like what the way we look at the business is like we don't want another contract. We just want to go and become the partner in that business on the basis like we work on the pain and gain mechanism. Like if they are giving us the business and we are not giving them the service they contracted us, they can reduce the money. So we will have the clauses in our contracts. And if we give them the good services, so they can link some bonuses to our performance. What we are doing, we are taking the pain to make sure our Yeah. customer So gains out of that. so your unique proposition is the pricing mechanism. So you are Yeah, driving the behavior of a risk sharing with the business. and to be honest, like the business, these are the support services we're talking about, and the businesses, we want businesses to focus on their key expertise on their operation. Leave these to us because we are professional in accounting, we are professional on these, finding them the right people. If they, and we will give them the solutions, IT solutions, whatever they want. So we want them to focus on the business, and we're taking their pain away. Yeah. So you are creating a convenience for them. It is convenience, and also like we are taking the responsibility for the delivery Yeah. as a You are partner. building it's a trust-based relationship. It is a trust relationship, and it is having the what you call a your case of a having that your stake in the Yeah. And the pricing mechanism is the pure risk sharing that if you deliver, you get paid. If you don't get paid. it is correct. Yeah. And that's why we have got the quality assurance team and we have got the customer care team. So we are will be looking at on the day-to-day basis where how Yeah. we heading, what we heading. Right. So if we go back to the customer segment and particularly from a business perspective, if we look at the business side, so the Right, decision maker, and we are looking at the sole proprietors and the partnerships right now. We are not talking about the large listed companies at the moment. That's the example which I'm going to quote. So their right, pain point and the thought process is that they don't value or they don't put a value to the support services. They want somebody to take care of it who they can trust, number one, and right. they don't want to keep paying somebody without having a right kind of value delivery. So if you go and you look at the trust based relationship, because you are sharing the risk and you are bold enough that you are talking about getting paid or getting bonus if you deliver a certain bottom line, they will be more willing to hear from you rather than if somebody goes to them and asks them, pay me X amount and I help you to do that. In Pakistan, people don't really buy that argument because the experiences are not good. So you are helping them to get into the experiment or experience where they don't have anything to lose unless until they get a value out of it. So it's a great model, and that can drive your customer who are the businessmen, who are the partners in the businesses. And then you are bringing a certain convenience to them. They don't have to buy the infrastructure and they don't have to really invest in the infrastructure and the resources. You will take over their pain as in term of the outsource, and you will bill them based on the value delivery. It is correct. Right. It is So definitely. so now from a communication perspective, it's very important to understand, like we earlier said, that what drive your customers buying behavior. So if we look at the ACC and ACCA fraternity, so either it's a greed or fear, they want to earn more, or they have a fear that they might not find a job or they might not find the work, and they will try to avail your facilities, even as a paid service, to help them out to really help them to really reach or achieve the level of greed they have,
or the fear, they overcome the fear because you are helping them to seek that one. So they are, again, going back to fundamental, there are certain behaviors which you have to hit to drive that buying side of it, right? So the whole idea when we started with the philosophy is to understand the customer segment and their philosophy of life or their philosophy of doing business, and that will help you to build the right kind of communication and relationship. So deep dive in a customer segment and understanding their buying behavior and the drivers for the behavior, that will help you, or any business for that matter, help any business to really really go and sell the value proposition. Most of the time the risk is that we get carried away with our value proposition without considering the buying behavior and the driver of the customer segment. So that's why that linkage is important, and the things happen जब आपकी उनसे conversation establish होती है, उस conversation में जो आपके communication का pattern है, जो articulation है communication में, that will matter a lot. That how you really उनको आप ड्राइव करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि जो प्रोडक्ट और प्रोपोजिशन आप लेके गए हैं वो उसको बाय कर ले. So understanding that customer segment is a key area, and then building that communication which can drive their behavior. अगर आप खुद उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं and you are not trying to understand the customer side, it is a very very hard sell, क्योंकि buying behavior उसका है. So आपने वो ड्राइव किया. Point taken, sir. Thank you. ठीक है. Thanks. Thank you. Great. Thank you for sharing. So who is next? And there are few comments there in the question tab, if you can pick up on those. And I think most of are coming from your own team member, Manur. And customer segmentation need more clarity, Rabia Sharif. Taxation, Mathi. What service is going to offer if someone want to start a new business? That's again coming from Rabia. So please have a you can answer those in the question tab, so bring more clarity. So who is next? We have got anybody. So who is next? Please do raise hand. I can see a one hand raised somewhere. Next, can we have next person there? Guys, who's next? No, it was good. I think from a business model canvas perspective, it was a good. But from a business perspective, it was very good. That might need a certain clarity around the customer segment, linking it back. Again, they might require a thought process. But the important thing is that you have taken the first step, and you are thinking in that direction. If you have got the right kind of questions, believe me, you will get the answers. If you can't think about the questions, then it's become very difficult to get to the answers. So I think you have got the right kind of questions. You tried to address some of them, and yeah, Judith, we can understand it's simple and it's straightforward. But from a presentation perspective, from an articulation perspective, it's very simple because you have got all the background knowledge. But if you are presenting it to a third party and particularly to customer, you might have to go a little bit in a different way. But it's quite understandable. So I can't say that it's not understandable. It's very, very understandable. And it's very well presented at the same time. Thank you. Going back, who is next? Okay, so if nobody is willing to go there, I have one or two videos that we will try to wrap up. Thursday is going to be our last session.
We will have a member network panel members to come and join us there as well. So they will be talking about what the MNP is all about, how MNP member network panels support members and students, and what kind of activities they do. Whenever we have a chance and the face-to-face interactions, we will encourage you to really meet those MNP members and try to stay connected with them. And at some point of time, we would like you among this group uh, to really come and join MNP at some point of time. It's a great forum to really give something back and support, and your voice also become a voice for the International Assembly. So you will be meeting MNP in the next Thursday. Uh, Mutahid, I think we are not finding many people who have a courage to really present, and we are totally okay if you have a half-baked one, and we can build conversation around it. I'll give you 2-3 minutes if you want to think about it, and then we will go to a one video and we try to wrap up the overall session. Sure, Maurice, you can speak and you can raise your hand. I can unmute you if you're muted. Maurice, if you can raise your hand, we can unmute you. You have to raise your hand so we can see you there. It's a long list. Let me try.
Okay, so you raise your hand and let me. Okay, great, you got it. G, please. सर हमने जो है एक बिजनेस कैनवस पे हमने एक्टिविटी की थी और वो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं नहीं लेकिन हम लोगों ने मिलके एक एक्टिविटी की थी हाउस ऑफ प्राइस के नाम से। ये उस्मान भाई भी हमारे साथ थे। अगर उस्मान भाई हैं तो उनको भी अनम्यूट कर दें। बाकी मैं, उमैर, उस्मान भाई और ताबिंदा और अजहर जो थे। तो अगर जो है ये हमारा जो है वो बिजनेस मॉडल आप एक दफा क्या है जो है मैं ये प्रेजेंट कर दूं आपके सामने। Sure, sure. So, Muttahid, if you can make Mughis a presenter. Muttahid, if you can bring Mughis as a presenter. हेलो G Mughis, Muttahid. Okay, let me try if I can make you a presenter. Okay, yes. So now you are a presenter, Mughis. सर कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, now we can. Let me switch off Sir, my. the business is about house of price. We are selling price. um, आप हम लोग जो है जब we are in a teenage or something 13 to around एज जितनी भी हमारी मतलब है तो इसमें हम प्राइस जो है खास तौर पे ये जो पहले हुए प्राइस जो होते हैं सो आवर की पार्टनर्स जो है हमारे सप्लायर्स बेसिकली जो कि हमें जो है जो है वो पोटैटोज जो है खास तौर पे जो ये जो पोटैटोज होते हैं मार्क उसके उसके वेंडर्स और हमारी मार्केटिंग एजेंसीज बेसिकली जो कि हम जो है बेसिकली आउटसोर्स करेंगे अपनी मार्केटिंग उसकी और और लॉयल कस्टमर्स जो कि हमारे कस्टमर्स होंगे बेसिकली। और सर हमारे वैल्यू प्रोपोजिशन बेसिकली जो है वो ऑर्गेनिक क्रिस्पी फ्राइज जो है ये हमारा एक वो है। और हमारा जो सॉस होगा वो एक यूनिक हमारी प्रोपोजिशन है वैल्यूज की। अच्छा क्वालिटी जो है वो हम जो है बेसिकली हमारे जो है जो प्राइस के वो होंगे उसकी क्वालिटी हम इस तरह से मेंटेन करेंगे कि उनकी अ, एक ही उसकी कटिंग के जो प्राइस के वो होंगे एक ही कटिंग के उसके और हाइजीन और देसी मतलब उसके हिसाब से जो है हम वो करेंगे और मेंटेन रखेंगे अपनी क्वालिटी को। सर हमारे जो की मार्केटिंग चैनल्स होंगे एक तो हम आउटसोर्स भी कर रहे होंगे दूसरा जो है सर इसमें जो है हम आउटसोर्स हम इस तरह से करेंगे कि सर डिफरेंट एजेंसीज को हमने वो दिए हुए होंगे जिस तरह से सोशल मीडिया जो है हम किसी कंपनी को हम जो है रेफर कर देंगे उसकी वेबसाइट बनाना उसके ऊपर पूरा जो है फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे उनकी तलते हुए कोई भी हम शेफ जो है वो हायर करके उनकी तलते हुए चीज़ों को जो है वो करेंगे। एडवर्टाइजमेंट थ्रू पैम्फलेट्स जो है वो जो है वो हम करेंगे पार्टनर इवेंट्स डिफरेंट जो है ये हम जैसे हमारा
बिजनेस जो है वो होता जाएगा, क्रॉस होता जाएगा, तो हम जो है डिफरेंट पार्टनर इवेंट्स करेंगे, मतलब कि किसी के साथ कोलैबोरेशन करके इवेंट्स कर दिया कि अगर उनके यहाँ जो है कोई इवनिंग नाइट हो रही है, कोई क्या नाम है फंक्शन हो रहा है, कोई स्कूल में फंक्शंस हो रहे हैं, तो हम उनके साथ मिलके ना ये एक इवेंट्स जो है उस पे जो है अपने प्राइस वो करेंगे। इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमने जो है थ्रू फूड पांडा, थ्रू जो है अपनी भी है एक वो अपने वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंटेन किया होगा। और हमारी जो वो होगी कि हम मास मैसेजिंग जो है ईद के ज़रिए जो है ना, ख़ास तौर पे जब हम फीडबैक्स लेंगे, फीडबैक्स के ज़रिए हम जो है उनके टेलीफ़ोन नंबर्स या कोई ईमेल एड्रेसेस जो है जब भी वो लोग हमारे से शॉप करेंगे, तो हम उसके वो ले लिया करेंगे। अच्छा, तो हमारे सर कस्टमर सेगमेंट्स जो है ना वो वॉकिंग कस्टमर एनी एज ग्रुप, लेकिन मेन जो है हमारी जो है एज ग्रुप जो है वो अराउंड 13 टू 21 एज ग्रुप है। लेकिन इसके अलावा भी एज ग्रुप के लोग जो है प्राइस तो कोई भी आजकल के ज़माने में खाते हैं। होम डिलीवरीज जो है ना वो हम लोकेलिटी में जो है डिफरेंट लोकेलिटीज में हमारी वो होगी, हमारी डिफरेंट ब्रांचेस आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे हम करेंगे। और स्कूल कॉलेजेस और टीन एजर्स को बेसिकली हमने जो है टारगेट किया हुआ है। और सर फिर हमारे जो है कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो हम डिस्काउंट, मतलब जिस तरह से इवेंट वाइज डिस्काउंट करेंगे, जैसे जैसे अभी रिसेंटली ईद मिलादुन नबी गुजरा है, तो उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया। या आपकी जो है हेलोवीन अभी आया था, इस पे 10% 20%, ये थोड़ा मतलब वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स हमें सोच के जो है 14 अगस्त पे डिस्काउंट दे दिया हमें, ईद पे डिस्काउंट दे दिया हमें, 25 दिसंबर, मतलब डिफरेंट ओकेजन्स जो है ना, थैंक्स गिविंग हो गई, ईस्टर हो गया, और जितने भी इवेंट्स जो होते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों के उससे जैसे जैसे दिवाली भी हो गया और बहुत सारे जितने भी इवेंट, उनके हिसाब से हमने जो है वो डिस्काउंट पैकेजेस दे देंगे। डिस्काउंट फॉर सोशल मीडिया एक्टिवेशंस, ये हम करेंगे। रेफरल डिस्काउंट्स जो है ना, अगर कोई 4-5 लोगों को और रेफरल कर देता है, तो हम जो है उसका एक डाटा मेंटेन करेंगे, इन्होंने इनको रेफर किया, इन्होंने इनका रेफर किया, तो उसको जो है हम एक खुसूसी डिस्काउंट जो है। प्रोडक्ट क्वालिटी हॉटलाइन है, हैप्पी वीकेंड फॉर हैप्पी कस्टमर्स, मतलब जो है हर वीक का हम एक हैप्पी वीकेंड का बनाएंगे, जो हफ्ते की नाइट होगा उस पे जो हम कस्टमर्स को वो देंगे। कस्टमर फीडबैक जो है ना वो हमारा हम हर कोशिश करेंगे कि हर जो हमारा जो टेस्ट कर रहा है तो उसका जो है कस्टमर फीडबैक लें। फिर सर जो है रेवेन्यू जो है ना वो प्रोडक्ट की हमारी सेल्स होगा, और रॉयल्टी ऑफ इनकम ऑन सेल ऑफ फ्रेंचाइज, मतलब हमारी जब ऐसे ऐसे करके हम ग्रो करते जाएंगे तो हम जो है फ्रेंचाइजीज को अपने जो है राइट्स देते जाएंगे। उसमें हमारे जो है सर कुछ कह रहे हैं, हमारे जो है कहाँ से? फ्रेंचाइज, नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड। ये सर फ्रेंचाइज के बेसिकली हमारे जो है राइट्स होंगे, उसमें हम जो है उनको ऑयल जो हम यूटिलाइज करते हैं वो हम बताएंगे, और जो हम प्राइस के साइज और जो है प्राइस जहाँ से हम लेते हैं वो उनकी जो है वो बताएंगे। अच्छा सर, फिर जो है हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा सर, वो रॉ मटेरियल है, जो कि हमारी जो है डिफरेंट उससे आएगा। रॉ मटेरियल खास तौर पे आलू की जो है क्वालिटी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी कि आलू कौन से आ रहे हैं, और इवन के हमें अगर थोड़ा सा महंगा भी परचेज करना पड़े, लेकिन हम करेंगे हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। और कैरिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो उसकी होगी, स्टाफ सैलरीज कॉस्ट होगी, इक्विपमेंट फैसिलिटीज ठीक है सर, इस पे होगी, रेंट होगा क्योंकि हर शॉप का एक अलग से रेंट होगा, तो वो हमें बेयर करना पड़ेगा। और पैकिंग का मटेरियल जो है ना वो सारा हमें जो है वो रखना पड़ेगा कि एज पर दी हेल्थ हेल्थ
उस पे जो है हेल्थ क्वालिटी पे मेंटेन करना होगा। फिर जो है सर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस ये होगा सर, मार्केटिंग हमारी जो है कॉस्ट में आएगी और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये टोटल सर जो है हमारे ये है, हमने इसके साथ एक पिक्चर भी थी जो कि इसकी पूरी जो है हमने बनाई थी, हमारा ग्रुप का वो था, ये भी ग्रुप मेंबर्स हैं नहीं हमारे, तो ये जो सारी हमने एक्टिविटी की थी उस दिन, तो ये सर हमारा था। माई पिक्चर पता नहीं कहाँ मिस आउट हो गई, चले, कोई बट कोई हमने मसला नहीं हुई। हमने Just इसकी I'll go back to my fundamental question. So जी you have सर, got a customer segment. एक What मिनट सर, मैं drives इसको the ऊपर कर जी जी सर, जी सर। what would be the key driver for the मुत्तहिद आप अनम्यूट है, आप म्यूट नहीं हैं इस वक्त। एक मिनट, let me mute. Okay, he's gone on me. Mughis, आपने जी एक जी कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफाई किया एंड दैट्स अ वेरी राइट कस्टमर सेगमेंट। आपके पास एनी एज ग्रुप, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्राइज, सो आई थिंक दैट्स पॉपुलर एवरीवेयर, and then you are talking about school colleges. The question, what will drive your customer segment to buy your product? उनका वो क्या बिहेवियर है? देखिए, फ्रेंच फ्राइज हो गए या क्रिस्पी फ्राइज हो गए, दीज आर अगेन नॉट द एसेंशियल वन। अगर आप कोई कहे ना कि आटा बेचना है तो हमेशा उसके लिए आपके पास दीज आर द एसेंशियल्स वन। So सर। why people should buy fries, or why they buy fries, and why they should specifically buy your fries? सर क्यों खरीदते हैं हमारे वो? जो है हम एक टेस्ट, हमारा जो है कॉन्सेप्ट ये था कि टेस्ट हम किसी भी इस जनरेशन के गैप में अगर हम डेवलप कर देना, खास तौर पे ये स्कूल्स कॉलेजेस और टीनेजर्स, तो जो है मतलब अगर हम इनको शुरू शुरू से कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री No, शुरू शुरू में no, जिस no, तरह no. से My question is not that कि आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा और people will be buying it. My question is that लोग फ्राइज खाते ही क्यों हैं? Why fundamentally they eat fries? सर बेसिकली मैं अपनी बात करूं तो जिस तरह से व्हेन आई विल गो एंड प्ले एंड आफ्टर दैट मुझे एक स्नैक की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो वो स्नैक्स जो है ना वो हम प्रोवाइड करेंगे। और ये जो है जिस तरह से मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे एक स्नैक की आफ्टर प्लेइंग और आफ्टर डूइंग एनीथिंग विच इज वेरी विच इज मतलब मुझे मेरी जो है फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो चीज जो है ना मैं लेके जाती है मुझे प्राइस पे, या मुझे कोई ऐसी चीज पे जो कि मतलब मुझे फौरन जो है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खास तौर पे ना मुझे प्रोवाइड करे। सो दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। तो अगर कोई एक तो लोग जो है तड़के के लिए तफरी के वैसे भी मजे के लिए भी खाते हैं, लेकिन माय होल कॉन्सेप्ट के क्या नाम है, अगर आपके पास एक एक तो होता है हम लोग बिस्किट और चाय पी रहे होते हैं, तो मेरा तो ये है कि अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरा ये होता है कि एक स्नैक जो है ना भरपूर ये मुझे मिल जाता है। तो अब जो टीनेजर्स जो होते हैं ना सर, उनको जो है एक ये इसकी खास तौर पे लोगों को ये जो प्राइस जो होते हैं ना वो आप अगर उनमें आप एक टेस्ट को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री खिला के आप 2-3 मरतबा कॉम्प्लीमेंट्री खिला के उनमें ये टेस्ट डेवलप कर दें, तो वो एक बड़ी एक आपकी मार्केट डेवलप हो जाती है। वो सिर्फ मार्केट ये नहीं होती, बल्कि आपके जिस तरह से मैकडोनल्ड्स और ये इन्होंने केएफसी ने डेवलप कर दिया है प्राइस, मैकडोनल्ड्स और उसके केएफसी के, और फिर उसके बाद जो है डिफरेंट जो है जितने भी यहाँ प्राइस वाले हैं, उन्होंने अपनी टेस्ट डेवलप कर दिया, इस वजह से लोग जो है बार बार उन्हीं के पास आते हैं। Okay, I'll go back to again my fundamental question.
what drives our behavior to ask for snack and not wait for the food? देखें, अल्लाह ताला ने एक इंसान का निजाम बनाया हुआ है ना. हमारा बेसिक निजाम जो है वो 2 दफा के खाने पे है, सुबह और शाम के खाने पे, and we can add third one. So, Yes. and everybody knows that the snacks generally are not happy, and the meals which are not required and we are taking it is not going to add value. So, what exactly drives us to ask for snacks? देखिए, जैसे कोक की मैं बात करूं, उन्होंने एक हैप्पीनेस के साथ लिंक कर दिया है, right? So you feel happy, you go for soft drinks or coke, or happiness means coke. And similarly, आपने कहा जब आप खेल के आते हैं, थक के आते हैं, तो you are looking for snacks, and the fries is one of a thing. So Yeah. what exactly, why people really go for something which is not good for them and they pay सर for it? इजी, मेरे ख्याल से सर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तो इजी टू ईट एंड क्विकली टू ईट, मतलब क्विक, आप जितनी आप घर जाएं तो आपको पहले खाने बनाने के लिए एक पूरा सोच, पूरा आपको वो ड्रेस काटे और फ्राइज काट के आपने तेल में डाला और 10 मिनट में एक फ्राइज तैयार हो जाते, 10 से 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से. सो एक तो ये तो इजी, खासतौर पे इसी वजह से ये Convenience. कॉन्सेप्ट वेस्ट वेस्ट से लेके Snack. यहाँ है. जी जी, नहीं, कन्वीनियंस है. यस सर, कन्वीनियंस है. एक तो डेफिनेटली जो बहुत बड़ा एलिमेंट आपने डिसाइड ड्राइव किया कि जो हम प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है कन्वीनियंस का. यस सर, और दूसरा दूसरा वो अभी यहाँ पे मुर्तजा ने भी बात की है, एंड आई थिंक दे आर मुर्तजा ने ही बात की है, सॉल्ट और शुगर का जो इनटेक होता है, दैट्स गिव यू इमीडिएट सेंस ऑफ रिलीफ, हैप्पीनेस. लाइक यस सर, कोक की साइड पे जब आप उसको हैप्पीनेस से लिंक करते हैं, दैट्स बेसिकली जो एक्सेसिव शुगर आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जो उन्होंने यस उसको सर, लिंक कर दिया हुआ हैप्पीनेस से, दैट्स ड्राइव योर फीलिंग एंड दैट्स ड्राइव योर बिहेवियर्स, राइट? यस सो सर, इसमें एक चीज साइकोलॉजिकल है और दूसरी चीज जो है वो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, which is driving that behavior and driving that repetitive behavior as well, right? So यस सर. again, going back to the customer segment, ये जो डीप डाइव रिलेशनशिप होता है ना, जब आप इसको कि कस्टमर, हम जरूर ये जानते हैं जहाँ पे टेस्ट अच्छा है लोग जाते हैं, बाय करते हैं, टेस्ट इज डेफिनेटली इज इम्पोर्टेंट वन. But why knowingly I go and have a pizza? Why knowingly I go and have a fries when I know that कि वो it's not good for my health, right? So वहाँ पे what is the craving? How you will drive that craving, which will end up with a buying behavior? और जिस सेगमेंट को आप बात कर रहे हैं उनके लिए व्हाट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, व्हाट वैल्यू दे ड्राइव देयर, और उस वैल्यू को आप किस तरह कम्युनिकेट करेंगे. इट्स नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर ओनली, इट्स अबाउट, क्योंकि जब आप उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चले जाते हैं, हाउ यू विल कम्युनिकेट टू ड्राइव दैट बाइंग बिहेवियर, वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. सो मुर्तजा इज सेइंग पिज्जा जब घर में घरारी ये किड्स की ख्वाहिश, या आई couldn't get that one, Murtaza. For me, the fries is a divine food. Nothing on the planet tastes like fries. And Manur, I totally agree with you. I'm also a big fries fan. मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं इस चीज पे तो. But definitely these are the addictions and the behavior we have developed over the period. यस सर. अब आपने उस behavior को understand करना है, उस buying behavior को. What is the जी सर. trigger point? और आप उस ट्रिगर पॉइंट को किस तरह कम्युनिकेट कर रहे होंगे कि पीपल शुड कम एंड हैव इट. सो आपको उसकी कोई एसोसिएशन होगी, या एग्जिस्टिंग एसोसिएशन होगी, या नई एसोसिएशन आप डेवलप करेंगे, एंड देन यू ब्रिंग देम फॉर दैट craving, and then you keep them for the taste, right? So that's where you get यस a सर. repetitive result. सर बेसिकली उसको जो है हम हमें इसलिए ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस के जो लोग बच्चे होते हैं, सो ये आजकल के खैर अब जो है जमाने में जो है घर के खाने को कम प्रेफर कर रहे होते हैं. ज्यादातर बाहर के खाने में आप अगर नोटिस करें, खास तौर पे हम मेरा अपना जो हो गया कि 1 वीक, एक वीक में एक डे ऐसा होता है कि जो हम बाहर का कुछ ना कुछ खा ही रहे होते हैं. सो वैसे उसको मैंने ये हम लोगों ने ये देखते हुए
ये हमने ये किया था कि हम इस तरह से अपनी जो है टारगेट मार्केट जो है अचीव करेंगे कि हम जो है डिफरेंट कॉलेजेस और जहाँ स्कूल्स और पार्क्स जो हैं और डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स के पास बाहर जाके हम ये अपने स्टॉल्स जो है वो वहाँ लगाएंगे और वहाँ से वैल्यू जनरेट करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि यूनिवर्सिटीज भी हो गई इसमें और क्योंकि आप क्लास लेके निकलते हैं, मुझे अभी तक याद है मैं एसीसीए की क्लासेस में जब भी ये 6 साढ़े 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक होती थी, तो हमें एक बीच में ये चाहिए होता था कि अब सुबह से हम अगर ऑफिस से आए हुए हैं तो बीच में एक 6:30 बजे का एक ब्रेक, जो 6:30 बजे से पहले जो हमारे पास टाइम होता था हम उसमें फ्राइज ही खाते थे, ताकि हम 10 बजे तक हमारी क्लास में मतलब भूख की वजह से हम कोई वो ना नींद नींद ना आए या कोई ऐसी चीज थी। मुझे इतनी तो याद है मैं अपनी लास्ट जो क्लासेस ले रहा था तो उसमें हम लोग ये यही जो है वो खाते थे फ्राइज, और मुझे वो दुकान भी अभी तक याद है। तो ये चीजें जो है खास तौर पे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इनके जो है उधर जाके हम स्टॉल्स अपने जो है पुट इन करके वहाँ नहीं, thank you, Maurice. Again, it's a when the people have stopped having a healthy breakfast, जो पहले एक पराठे और इस तरह करके था, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट 2 बजे तक भूख लगने का कॉन्सेप्ट नहीं होता था. So it's again, it's lifestyle has it changed, and the people have find a more opportunities to fill those gaps, and definitely snacks is a one of a way to really fill out that one. अदरवाइज जहाँ पे अभी भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो अभी आपने जिक्र किया कि 10 बजे के करीब भूख लग जाना, ये वो फन के लिए तो जरूर हो सकता है, बट इट्स नॉट समथिंग जो आपको ड्राइव कर रही हो. फिजियोलॉजिकल नीड आपकी जो जो भूख के हवाले से होती है. बट थैंक यू वेरी मच. आई थिंक यू हैव वर्कड हार्ड एंड इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. उसमें जो मैं तो इसको बड़ा सिंपली कैलकुलेट करता हूँ ना, कि आपने एक एक्स रुपीस पे आलू खरीदे और वाई रुपीस पे पर केजी आलू आपने फ्राई करके बेच दिया, और उसका गैप जो होता है वो 10 20 30 टाइम्स तक चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द overall how you are selling it and what the price point you are selling it. So it's a great profitable business, and fries की जो डिमांड है वो कम नहीं होने लगी. फ्राइज जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, fries is something which is a very regular snack in anywhere in the world, and very recognized one, and it's very addictive. People like me even we love that side of it. So most of the people, it's a everyday, every household snack which is a one of a preference. So thank you very much. I think great business model, but the one thing which I really loved here, the way you have simplified the customer segment in articulation, and the way you have put your value proposition in a very few words. That's the best word way to put it together. और जब आपकी clarity होती है तो फिर आपके लफ्ज जो है वहां पे बहुत कम लफ्जों में आप अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं. So thank you, Maurice, for sharing, and thank you all the participants who have shared or contributed. Uh, Today I'll just take another 10 minutes and we will wrap up where we are. Thursday again, I'm going to announce the Thursday is going to be our last session, और उसमें हम MNP से मिल रहे होंगे और थोड़ा सा wrap up वहां पे कर रहे होंगे. But just to go back to the journey where we started, and some of the area which G. Maria Sheikh, round of applause for everybody, and especially Maurice and the people who have presented earlier. So thank you very much. Uh, just going back to the fundamental where we started with the mindset and the self-awareness. Self-awareness is the key of this 6-digit program. It's not about the skills, it's not about the tools. It will come with the way. If your mindset is at the right place, if your heart is at the right place, आप बाकी skills or tools पे definitely, I'm sure you will figure out a way to really develop that. So that's an important one. And just at the last, I would like to share quickly a video. मुतहद हमें थोड़ा सा इसको forward करना पड़ेगा. We have to close it in 8-9 minutes. But I would just like to run the video, if you remember, why you will fail in your career, why you will fail to have a great career. That is a great reminder for us
हाउ वी जनरली बिहेव और हम अपने लिए कैसे कैसे एक्सक्यूजेस जनरेट करते हैं. सो आपके लिए मैसेज इसमें ये है, आप अपनी विंडो में रन कर रहे हैं मुतहिद, बिकॉज वी वुड नॉट बी एबल टू हेयर दैट आई बिलीव. Yes, sir. कैन वी हेयर इट? Uh, आप रन करके देखें. Can you hear, sir? नहीं, वी कांट. सो लीव इट देयर. ये यहाँ पे इस तरीके से सही नहीं चलती मतलब. सो I'll encourage you to go back today and spend again of 15 minutes on this video and try to see कि कहाँ कहाँ पे इसमें जो रिफ्लेक्शन आ रही थी वो रिफ्लेक्शन आपके जर्नल एटीट्यूड या थॉट प्रोसेस की आती है या आपकी इंटरेक्शंस की आती हैं. ये वो सारी चीजें हैं जो आपको रिमाइंड करवाएगी कि आप as a human being, and that's not only for you, for everybody, how we create excuses for not doing stuff and where it leads, how it create regrets for us. सो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आसान डिसीजंस मिलेंगे, आसान सवाल मिलेंगे. जो पॉइंट है वो ये है, हाउ यू गोना हैंडल योरसेल्फ एंड हाउ यू गोइंग टू हैंडल योर सिचुएशन. आर यू द वन हु आर वेटिंग फॉर द हेल्प और यू आर द वन हु इज एक्सटेंडिंग हेल्प. सो आपका रोल क्या होगा, आपका कैरेक्टर क्या होगा, वो आपके डिसीजन से. लाइफ में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप अपनी चैलेंजेस के लिए, अपनी नाकामियों और कामयाबियों के लिए किसी दूसरे को इल्जाम दे सकें, इंक्लूडिंग द सक्सेस. आपकी जो सक्सेस भी होती है उसमें बहुत से कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, लेकिन आपकी अपनी डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है और वो एक ड्राइविंग फैक्टर होता है. इसीलिए जब हम 6 डिजिट का प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले इनिशियल 20 आवर्स वी जस्ट स्पेंड ऑन trying to give you the challenging questions कि आप अपने आप को चैलेंज कर सकें, अपने थॉट प्रोसेस को चैलेंज कर सकें. और जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि सोचिए कि आप किस तरह सोचते हैं. सो दैट्स अ की कंपोनेंट जहां पे आपको ये चैलेंज चाहिए होता है. I'll give couple of other examples. Some people may not agree with that. Again, अजीज भट्टी शहीद की अगर हम बात करते हैं तो उनको निशाने हैदर इसलिए नहीं मिला था कि उन्होंने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया था. उन्होंने एग्जैक्टली वो काम किया था which he is supposed to do, right? वो एक उस वक्त कमांड कर रहे थे and he is supposed to guide his soldiers in a best possible way. उनको निशाने हैदर इसलिए मिला था कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करते वक्त देयर वाज नो फियर. उनको अपनी जिंदगी की उस तरह की परवाह नहीं थी जितनी उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने की. व्हाटएवर द बेस्ट वे, व्हाटएवर द रिस्क ही हैज टू टेक, ही डिड दैट. सो अगर आप एक ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से देखें तो ही हैज डन एग्जैक्टली समथिंग जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. बट उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से और जिस बोल्डनेस के साथ और जिस ब्रेवरी के साथ डिस्चार्ज की थी, दैट्स व्हाट लेड टू द निशाने हैदर. राइट. सिमिलरली अगर आप किसी भी शहीद की, राशिद महनाज की एग्जांपल ले लें आप, तो राशिद महनाज इज सपोज टू डिफेंड पाकिस्तान एंड मेक श्योर कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो सिक्योर हों. ही वाज लाइक इवन ही एज अ ट्रेनी he was committed to that, but the way he did it and given the situation, that's what led to the nishane हैदर. इसी तरह जब हम बात करते हैं ना लाइफ में भी, तो हम सबके पास मैयर्स होते हैं, हमें पता होता है डीप डाउन कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं समटाइम कि व्हाई आई शुड और शुड नॉट डू दैट. और किसी सिचुएशन में जब हम एक डिसीजन लेते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा कैरेक्टर, हमारा बिलीव, हमारी लाइफ की फिलॉसफीज. सो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर आपकी वो बिलीफ फैक्टर, आपकी लाइफ की फिलॉसफी और आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है तो एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर निशाने हैदर वन वे और अदर. कहीं ना कहीं पे आपको इस तरह के तमगे मिल रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा. एक और मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि जब हम कुछ चीज मैयर करते हैं ना, लेट्स से हमने 1 kg की चीज मैयर करनी है, द पीपल हु रियली मैयर दैट एग्जैक्टली, अगर आप 1 kg का mass है, 1 kg का substance है, and you are equal to kg, there is no surprise. If you are a little less, you need to improve and you have to get the kg. Interesting life start होती है कि जब आपको किलो का एक्सपेक्ट किया जाए, 1 kg का एक्सपेक्ट किया जाए और आप 2 ग्राम ज्यादा हो उससे. दैट्स वेयर द लाइफ बिकम इंटरेस्टिंग. जहां पे दर्जन 13 का होता है और ग्लास के साथ ग्लासी आती है ना, वहां पे बरकत भी आती है और वहां पे चीजें चेंज होती हैं. सो आपने अपने रोल में, अपने करेक्टर में, अपनी लाइफ में इस चीज को इवेल्युएट करना है कि आपको अगर कोई मैयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड पे आप अपनी लाइफ, जिस फिलॉसफी पे आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, आप वो 1 kg हैं, आप उस 1 kg से कम हैं और यू आर द वन हु इज
2 grams more than a kg. आपका जो दर्जन है वो 13 का है, या आप 11 का दर्जन देना चाह रहे हैं, या आप जस्ट एक 12 का ऑर्डिनरी दर्जन दे रहे हैं। आप ग्लास के साथ वो ग्लासी भी प्रोड्यूस करते हैं, वो वैल्यू जनरेट करते हैं अपने कस्टमर के लिए, या वो वाव फैक्टर क्रिएट करते हैं, या यू आर जस्ट द वन व्हिच इज एवरेज और बिलो एवरेज व्हिच पीपल एक्सपेक्ट। और हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि आपके रिवॉर्ड्स जो हैं इंटरेस्टिंग वहां से शुरू होते हैं जहां पे आप आउटस्टैंडिंग होते हैं, जहां पे आपका दर्जन 13 का होता है और ग्लास के साथ ग्लासी होती है, और जहां केजी में आपके 1000 और 1100 ग्राम्स की बात कर रहे होते, 1000 प्लस ग्राम्स की बात कर रहे होते। दिस इज वेयर द लाइफ स्टार्ट और डिलीवरिंग यू द इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। ये जो जब भी हम ये बात करते हैं, ये चॉइसेस आपकी अपनी हैं। आप आज ये चॉइस करेंगे, कल करेंगे, इस पे मेहनत करेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। चॉइसेस के बाद आपको हमेशा उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आपकी चॉइसेस अच्छी हैं आज, आपको लॉन्गर और लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, आपको वो रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अल्लाह ताला का हर एक के साथ वादा है और यूनिवर्स का एक पूरा निजाम है कि आपकी एफर्ट्स जो है ना वो रायगा नहीं जाती। इट मे नॉट गिव यू द इंस्टेंट ग्रेटिट्यूड, इट मे नॉट गिव यू द इंस्टेंट रिवॉर्ड्स, बट ये नहीं हो सकता कि यू स्टे अनरिवॉर्डेड इफ यू हैव मेड एन एफर्ट। उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है, थोड़ा सा बिलीफ चाहिए होता है, बहुत सा ऑप्टिमिज्म चाहिए होता है, और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सो इफ यू आर देयर विद दैट ऑप्टिमिज्म, दैट कंसिस्टेंसी, you are pretty much there. Just try to deliver beyond the expectation. हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर आपको 10 पुशअप्स निकालनी है, जो सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं आप पुशअप, वो 11वीं होती है, वो पहली या 10वीं नहीं होती। सो यू हैव टू रीच टू द लेवल अगेन जहां पे दर्जन 13 का हो, ग्लास के साथ ग्लासी हो, और जो किलो है वो 1000 ग्राम से ज्यादा का हो। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, बिलीव मी, आपके लिए रिवॉर्ड्स बहुत फर्क है। इफ यू आर अदर काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास हमेशा एक्सक्यूजेस होंगे कि व्हाई दे शुड नॉट रियली मीट दोज बेंचमार्क्स, और आपने अपनी लाइफ के लिए अभी बेंचमार्क डिसाइड नहीं किए हुए, तो आपको हमेशा हर साइड पे एक चैलेंज नजर आएगा। यू विल बी वेटिंग फॉर समबडी टू हेल्प rather than extending the help. So 6 digit program has nothing new except that कि हमने वही competency framework की बात की, हमने उसी performance objectives की बात की जो आपकी qualification का part है। कोई नई चीज यहाँ पे नहीं आई, सवाए इसके कि इसका डिलीवरी मेथोडोलॉजी था और आपकी एक कमिटमेंट थी। सो यही कमिटमेंट आप लाइफ में जैसे दिखाते रहेंगे, चीजें आपके लिए चेंज होती चली जाएंगी। सो देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर गोइंग टू गेट, देयर इज नो न्यू कैरेक्टर यू हैव टू बिल्ड, यू जस्ट हैव टू बी मेक श्योर कि जो बेंचमार्क्स हैं आप उनको अचीव करें और सरपास करें, बट पहले अपने लिए बेंचमार्क सही सेट करें। आसान तरीका उसका हमेशा वही होगा कि आप अपने लिए 4-5 सवाल रखें जो आपके लिए हमेशा गाइडिंग प्रिंसिपल हो, और सवाल जो मैंने लाइफ में यूज किया, एंड आई एम श्योर देयर आर अदर क्वेश्चंस एज वेल, वी हैव सीन दैट थिंक पॉजिटिव, थिंक अहेड, what and why, what else, is it the best I can do? So these are the questions which will be helping you in every situation to make your decisions, right? So guys, thank you very much, thank you for today's session, or Thursday, we will see you again, and that would be the last session, and then we will go with the certificate distribution. I wish you good luck, and I wish you well for your careers as well as whatever you decide to achieve in your life. Stay connected with ACCA as well as with among yourself. जो आपने network बनाया है, just make sure इसकी net worth को आप enhance करें और इस network को आगे लेके चल सके. Thank you very much. Thank you guys. Thank you very much.